Good afternoon and namaskar. Today we are conducting the fifth webinar or in the series of SQAAF webinars we have initiated on 21st of July. We have all our resource persons with us, principals from all corners of life of the country. I have seen them on YouTube. And we also have good fortune of having our Joint Secretary, Shri Al Hilal Ahmed with us. I would request sir to share his thoughts with us on SQAAF. Sir, over to you. Sir, you are on mute. Please unmute, sir. Am I audible now? Okay. Thanks, Ashley, for this wonderful opportunity. Esteemed resource persons for today, Madam Kalpana Kapoor, Madam Rita Singh, and Ms. Adogla ji, and all the participating principals. Namaskar. As you all know, the National Education Policy 2020 has mandated each state, including CBSE, to establish an independent and autonomous body known as State School Standard Setting Authority by 2023. The primary responsibility of SSSA body is to regulate the public and private schools, ensuring they adhere to the minimum common standards. CBSE has also been officially declared as the standard setting authority for the schools affiliated to it by the Government of India. Consequently, the board has developed a comprehensive framework called the School Quality Assessment and Assurance Framework that lays out explicit standards for all systems in a school and employs a rigorous and objective assessment of their performance against these expectations. The assessment process is designed with a developmental approach, promoting accountability and incorporates multiple sources of feedback. An assessment to offer a comprehensive view of school performance. It recognizes that educational outcomes are influenced by various factors and acknowledges the importance of teamwork within school. Starting from the academic session 2023-24, SQAAF has been integrated with SARAS, which is an online portal for affiliation, as you all know. All schools applying for the category of affiliation, any category of affiliation, and even the extension of affiliation now on are required to self-assess themselves against the SQAAF framework. Additionally, physical visits will be conducted by CBSE appointed resource persons in a randomly selected 5% of schools. The purpose of self-assessment under school quality assessment and assurance is to enhance education quality, standards, outcomes, and governance in schools. Schools self-evaluate various aspects such as teaching quality, teachers, number across subjects and classes, safety measures, financial probity, curriculum and accountability, sustainable infrastructure, available resources, community participation, etc. An honest, transparent, and rigorous self-assessment is expected to catalyze positive changes in the academics, management, and leadership of the educational institutions. We are fortunate to have today's resource persons with us who have been, instrumental in developing SQAAF framework. I have personally witnessed. Their expertise will, undoubtedly help us understand the nuances of SQAAF in a lucid manner. As self-assessment is now mandatory for all types of affiliation and extension, I urge all participants to make the most of this program by actively engaging and seeking clarification wherever necessary. Once again, thank you, and I wish all
a highly productive and enlightening session. Thank you. Thank you, Arvind. Thank you so much, Hilal sir. You have put more perspective to it, and I think you have given more clarity on the whole concept. Today we are conducting this part 3 of domain 1 on assessment, and today's resource persons are Deepa Dogra ma'am and Kalpana Kapoor ma'am. I'll give brief introduction of Deepa Dogra ma'am. She is Director Principal, Cambridge Innovative School, Jalandhar, and she is District Training Coordinator also for District Jalandhar. She has been part of this whole program since beginning, and the uh, dynamic leader she is. I hope she will delve deep into assessment and have you will have more clarity on assessment after her session. I'm sure of that. You will be enriched after her deliberations on that. And as you all have been listening to Kalpana Kapoor ma'am since day one, I think she needs no introduction. She is part of this SQAA program since beginning. I'll not take much of the time as I know you are all very anxious to listen to both the resource persons. One request I will make to all the participants is please keep putting your queries in chat box. We'll be replying you. Please send us emails also if you feel further clarity. We are reading each and everything you are sending us. So we will be trying to solve all your problems and answering all the queries during the webinars and after the webinar also. Thank you so much for being constantly there for last 4 webinars, and I hope till the last we will be together, and after that we'll have good clarity on what SQAAF is. और एक बड़ा अच्छा कमेंट आया कमेंट या कह ले या एक बहुत अच्छा किसी ने शेयर किया था कि अब SQAAF से डर नहीं लगता. आई होप बाय द एंड ऑफ इट वो डर जो थोड़ा बहुत भी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा. So over to you, Deepa ma'am. Thank you, ma'am, and thank you, sir. We set the tone together. आज सर ने कहा कि असेसमेंट है ये, और असेसमेंट का सबसेट है कि ये ओनरशिप भी हमारी है, और यही हमको जॉय एंड हैप्पीनेस हैज बीन ग्रांटेड. When I was going through NEP, its definitions for us, I was going through NCF 2023, Nipun Bharat series. The best time to be a teacher is now. और ये इसलिए भी थोड़ा बहुत लगेगा, जिसे कहते हैं ना, बिखरा हुआ लगेगा, क्योंकि हम एक डीकंस्ट्रक्ट करके रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, जो हमेशा सर सोचते हैं कि लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग प्रोसेस करेंगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट, जैसे मैम ने कहा, जितने भी क्वेश्चंस हैं, एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज पुट अक्रॉस. वी आर नॉट हियर फॉर डाइडेक्टिक, और वी आर नॉट हियर टू say that we know everything, but together we can have that answer. So today we are doing domain 1 part 3. Rita ma'am और कल्पना मैम ने करिकुलम पेडागोजी एलैबोरेट किया था कि क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, और किस तरह से हम लोगों को उसको अंडरस्टैंड कर और नई फ्रेमवर्क के लिए we can use the parameters given to us and enhance, as sir said, learning teaching. So moving to this, I would welcome you all today. Just a quick reminder that SQAA domains, 7 domains में सबसे ज़्यादा value of 40% is to curriculum, pedagogy and assessment. और इसका कारण क्या है? We don't have to define, but at the same time, every domain is interlinked. And that is the beauty that we have to discover, beauty that we have to define, the beauty which we have to make visible to all, that why everything has to be connected, and that is what we say, constructing the alignment for teaching learning. SQAA process हम कर चुके हैं. It is about the framework that recognizes and gives importance to self-assessment, so that the whole school is in the path of reflection, and that is through reflective policy, not testing or judging policy. तो सबसे ज्यादा जो फर्स्ट सेंटेंस था कि खौफ नहीं है, वो ये है
कि ये फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइज करता है कि हर किसी की कंट्रीब्यूशन, कॉन्टेक्स्ट और उनकी जो to move ahead, the willingness to move ahead is respected. And it also is process driven. And in this process, all stakeholders are engaged. Not one, the burden on the head only to plan also, to do the things also, to check the things also, to get the analytics and work. But each team member becomes partner. And the most important thing that I like is that it is for us to share. और वो अक्सर मैम कहते रहते हैं, कल कल्पना मैम ने भी कहा कि आप जो कर रहे हैं वो शेयर करिए. And for best is we bring in management because they are running the school. They are running the vision and mission of the national education and its aims and mission and their ambition for the young ones. तो स्कूल को आगे मूव करने के लिए बस एक डेवलपमेंटल कंटिन्यूम की कमिटमेंट चाहिए. सिर्फ टेक्स्ट बुक में टॉपिक पढ़ाकर नहीं, अपने पास हमारे बच्चे आएंगे. और मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी एनईपी की और एनसीएफ की, वो हमारे लिए अब डिफाइंड है. हम कहते थे कहाँ से डेवलपमेंटल कंटिन्यूम देखेंगे, तो वो एनसीएफ और एनईपी, निपुण भारत, फाउंडेशनल लेवल्स की ऑल डेवलपमेंट कंटिन्यूम, all the required curriculum targets along with the competencies and learning outcomes are defined to us. So अब मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों को ये है कि कहाँ से मिलेगा, या जैसे आप लोग कुछ लास्ट वीक में हम लोग कमेंट्स पढ़ रहे थे, ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ से होगा. तो ये आज हम वो आपको रेफर भी कर रहे हैं क्योंकि हम सब ने ये डिसाइड किया कि आज हम ट्राई करेंगे. We'll try to give you everything that you have been asking in the last 4 of the series. So anatomy, domains को समझना बहुत जरूरी है. ये हमारे whole school areas को define करती हैं. Subdomains specify what constitutes the concerned domain. What are the things that define that particular domain? What are the things that we can consider to make this plan or to take our schools to the levels of excellence? And the standards are the quantifying things, that how are we going to qualify or define that we are adhering certain standards. और उसके लिए हमारे पास assessment rubrics हैं, maturity level or performance indicators हैं, and what kind of documents we have to put in, उसके लिए एक plan है जो पिछले बहुत दिनों से almost everybody has been reiterating and sharing with you, that we have 4 hours to find out where we are, what we can do. And then we have the PDCA format to plan, to do, to act, and then check and move ahead. So this are, आज हम domain on the day 5, 28th, we are collectively going to do assessment. Quickly, आज का sequence रहेगा, थोड़ी सी recapitulation की assessment policy, NEP 2020, policy in NCF in the broader sense, SQAA की guidelines in domain 1.6, because part 3 कर रहे हैं हम, and we'll clarify self-assessment and evidences की interpretation. I will repeat it, और हम सबका, especially कल्पना मैम, जब भी ये वर्कशॉप्स में आते हो गए थे, हमको डायडेक्टिक नहीं बनना है. आपके लिए ये एंड नहीं है, आपको अपना कॉन्टेक्स्ट देखना है, आपके अपने एविडेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बस सेल्फ असेसमेंट में ये देखना है कि वो जितने भी एक्सपेक्टेशन स्टैंडर्ड्स की है वो हम अचीव कर रहे हैं कि नहीं. हो सकता है जो आज मैं एग्जांपल दूं वो आपके कॉन्टेक्स्ट में शायद कम रहे, आप उनको, you can add to them, you can reduce from them, you can go ahead and interpret it in the way that you think would help you. Take up score, do the assessment, and assure yourself that you're moving ahead. And we will work on reflection and feedbacks. इससे पहले कि मैं शुरू करूं, जल्दी से आप लिखिए कि NEP 2020 assessment changes क्या कहता है. How is NEP 2020 defining the spirit of assessment? और आज मैं आपसे ये कोट इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और नए सीरीज में है. वो कहता है कि क्योंकि हम आजकल बहुत डिजिटल रहते हैं कि समेटिव असेसमेंट अगर डिजिटल स्नैपशॉट है तो फॉर्मेटिव स्ट्रीमिंग वीडियो है.
एक है कि बच्चे ने क्या कर लिया है in a single moment of time, or next is it demonstrates how a child has developed and is acting as per own thinking and reasoning. ये मेरे को हमेशा से ये वैंडी वॉल हैं जो मैथमेटिक्स सेंटर करते हैं और वो अक्सर कहते हैं ये. So I always enjoy reading it and try to make the movies with what plans I will have when I'll be planning the lesson plan, when I will be planning the activities, the formative assessment, and can some of the formative assessment be part of my summative assessment? This is how I always start. So referral is NEP 2020 में section 4.3.5 है. It defines to us और वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं. It is about that it has to be competency based. It promotes learning and develops the skills and tests the higher order like analysis, critical thinking, and conceptual clarity is our main focus. And we have to keep it continuous so that we can revise our teaching. Students can have the new set of learning, not just doing a certain fixed rules of activities, and we process it so that we are able to optimize the learning for the development of all learners. अब जब आपने ये slide, a minute on this slide, can you please tell me what are the 3 words you like to pick up from this, जो आप use करना चाहेंगे? And we'll try, and आखिर में आप बताइएगा कि we've been able to share our interpretation of these. कोई भी 3 words अब आप type कर दीजिए, रीटा मैम और कल्पना मैम will share with us. And later on, we'll see whether we've been able to define them for you, illustrate those for you, and be able to give you some visualization of possibilities. तो जैसा सब में होता है, पहले competency समझते हैं. और कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क मैंने पढ़ा था, उसका रेफरेंस भी मैं आपको नेक्स्ट में दूंगी ताकि आप भी पढ़ सकें. वो कहते हैं उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनानी जरूरी है. थैंक यू टू एनसीएफ एंड निपुण भारत एंड एफएलएन डिस्क्रिप्शंस, वो हमारे लिए बन चुकी है. और उसमें जो कोर्स हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड हैं हमारे लिए. सीबीएसई हैज पुट इन ऑल द एफर्ट्स बिकॉज अगर इफ वी हैव टू लुक एट कॉम्पिटेंसीज की डेफिनेशन, वो एक कॉम्बिनेशन है एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज का, ताकि हम सक्सेसफुली डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पर उनको अप्लाई कर सकें और उसका हम एक आउटकम दे सकें. ये ना हो कि हमारे पास डिग्री तो है, बट व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग दैट इन रियल लाइफ सिचुएशंस, वी फील दैट वी नीड टू फर्दर गो समवेयर और वी हैव टू टेक सपोर्ट फ्रॉम समवेयर. और इसके लिए एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंसीज को सपोर्ट करता है थ्रू लर्निंग आउटकम्स. तो कॉम्पिटेंसीज अचीव करने के लिए सबसे जरूरी है वी आर क्लियर ऑन द लर्निंग आउटकम्स एंड वी हेल्प देम ट्रांसफर देयर लर्निंग टू न्यू सिचुएशंस. सो कॉम्पिटेंसी के लिए एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज तो चाहिए ही, पर कॉम्पिटेंसीज को डिफाइन और विजिबल और डेवलप करने के लिए लर्निंग आउटकम समझना जरूरी है. और सबसे अच्छी चीज है एनसीएफ 2023 आप खोलेंगे, these are clearly defined for you. Now my next one is culture में हम क्या करेंगे. So if you look at the culture is about systems. आपकी क्लास क्या है. और सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस बार लगी थी वो ये है कि जब एनसीएफ में डिफाइंड है तो नंबर ऑफ पीरियड से अब हम नंबर ऑफ आवर्स पे चले गए हैं. इसका मतलब आपका टाइम टेबल एक बार, कई जगहों में हमने देखा है एक बार टाइम टेबल बन गया और 10 साल तक वही टाइम टेबल चलता है. आई एम सॉरी, मैं जस्ट टेक इट फ्रॉम मी विद अ टैबलेट ऑफ ह्यूमर, बट ये जब आवर्स मैंने पढ़े तो मुझे लगा ये सबसे अच्छा है कि अगर कोई स्कूल अपने आप को स्पेशलाइज मैथमेटिक्स में करता है, एआई में करता है, तो कितनी अच्छी तरह ये शेयर्ड हो सकता है हब्स ऑफ लर्निंग में और कितने बच्चे आ सकते हैं शेयर करने के लिए. हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होना जरूरी है. टाइम सेटिंग भी दी हुई है क्योंकि हमारे आवर्स एंड मंथ्स एंड एकेडमिक ईयर इज वेल डिफाइंड. बट हाउ डू वी सेट देम इन द मैनेजमेंट सिस्टम? क्या हम उसको कर पाएंगे
that I will have the pre, midterm, post-term, whether it is planning, emergent curriculum बनाएंगे, ये नहीं कि पूरे साल का curriculum बना दिया और उसी को adhere करना है. बीच में बच्चों की problem आई, we started with remedials, but we will have to finish what is defined. Can we move on to the emergent system of curriculum because whole curriculum is already given to us? Do we put it in our systems? Are we so rigid in our scheduling that periods become important than the joy of completion and participation? Which are the standards we are referring to? Have we referred to the standards defined in the assessment policy? Have we referred to the standards defined through various circulars and definitions and defined the competency as per NCF? What kind of professional development and whom are we sending for professional development? What kind of physical structure we need? We don't need the big buildings. We need the optimum use of the spaces that we have. क्या मैं एक रूम को 3 बार यूज कर सकती हूँ? Can there be the tickets of timing in a single room so that lots of children come and go? These are few of the things that I have started thinking about and मैं share कर रही हूँ. And I reiterate, we all, when we were talking about it, whole team with Anjali ma'am at the helm of it, we keep asking one another, how are we interpreting ourselves? When it comes to culture, the mission is so beautifully defined in NEP. And I'll share with that, but we need knowledgeable staff, not just the teachers. We need right from management to our leaders who are leading pedagogical or administrator or any other leading lead hub of the school or otherwise. We need the culture of innovation. Mistakes ka right dena hai. Mistakes ko we don't have to judge, but we have to go and ask how the mistake has happened and is it because of the behavior, as understanding is a behavior, or is it because of our lack of clear learning outcomes? Are we just the difference between objectives, outcomes, and assessment? Are we clear about them and have we defined them? What are the cycles of engagement? What kind of strategy am I doing? Am I taking up only teacher-led and one activity for all? Or if I'm doing math sum, am I taking them to the art class? Yesterday, I was listening to Kalpana ma'am. Have we defined and redefined our pedagogies? Have I involved the community people for this engagement? Are we effective communicators? And effective communicators is speaking from the heart. We speak, again, I go back to the referrals. When we are communicating in the class, are we using the jargon? Are we using the cycle of teaching learning? Are we using the clear objectives and expectations and outcomes? And are we relevant? Or we're just finishing some things because it has to be finished? Or relevance is visible through children wanting to do more work, coming up, doing seva, expressing through things that if I'm doing English, I'm going to raise posters in my city for the condition of the environment, cleanliness, or anything they want to take up. That is where our culture needs a shift. And then the teaching is core of it, as always. If learning is the crust, the core is teaching. We all know it, but it can be, you can take one as core and another as crust, depending upon your context again. We can be changed to being facilitators. एक बहुत अच्छी एक्सपेरिमेंट हम लोगों को सुनाई गई थी, ट्रिपल टी, टीचर टॉक टाइम रिड्यूस करने की. और बहुत अच्छी एक्सपेरिमेंट हुई है उसमें. कहा गया कि हर टीचर अपने कमरे में स्टॉप वॉच लेके जाएंगी कुछ दिन और देखेंगी वो कितना बोलते हैं और बच्चे कितना बोलते हैं. और आई डोंट थिंक आई हैव टू आस्क यू आंसर क्या रहे होंगे, बट फिर वो चेंज शुरू हुआ. पर्सनलाइज्ड लर्निंग इतना मुश्किल नहीं है अगर हमारी अप्रोचेस ठीक हैं. एंड अप्रोचेस आर सो वेल डिफाइंड इन आवर NCF. Tools and resources for learning, we don't need to have the designer or high cost. Local resources, the resources which are there around us can be great resources, and tools are simple, which I'm going to share. Curriculum, I've been saying again and again,
the reference to NCF will clear a lot of doubts. It cleared for me. We need to have assessment design. सिर्फ टेस्ट नहीं, कैलेंडर में टेस्ट डेट डाल के नहीं, उस असेसमेंट में क्या क्या होना है वो पॉलिसी चाहिए, and how are we going to use collectively so that we see the outcomes and we enjoy and celebrate the outcomes. और learning, ये तो शायद हम सबका ड्रीम है कि the owners have to be our students and students to be the voice and they have to be the lead learners. They do not have to be the followers. जैसे मैम कल कह रहे थे, रीटा मैम, की फेक न्यूज की आइडेंटिफिकेशन, finding out whether this is relevant or not. And therefore, our choice is that not only in the four walls of the school, but anywhere and everywhere they are learning. अब quickly आप लोग एक comment देंगे कि आप agree करते हैं कि infrastructure जरूरी है? Do you think we need to look at our own structure of the whole school? And अगर mastery करनी है तो इन 4 elements को we'll have start looking at these also along with other things as shared in last 4 days. One minute for this. I look forward for your responses because अब transforming of culture का हमको एक मंत्र दिया है NEP ने, और ये सारे के सारे NEP से ही मैंने लिए हैं, और कुछ प्रेजेंटेशन तो सर और मैम की भी हैं जिनसे मैंने I have picked them up because it gave clarity to me. बहुत सारे yeses भर भर के आ रहे हैं. कल्पना मैम, thanks to all. Lots of yeses. तो फीचर्स ऑफ, तो कल्पना मैम वही है जो आपने कल मुझसे कहा था कि स्लाइड चेंज करो. Please go ahead. Yeah, the features of assessment क्या होंगे हमारे, किस तरह के असेसमेंट करेंगे, और करते आए हैं हम, ये नहीं है कि हम समझ नहीं पाएंगे, because we have been doing these things. We have been doing regular. Only shift it is asking is, let's identify formative and competency based assessment patterns. वो क्या है? We'll see whether we agree to it. कुछ आप अपने करेंगे, कुछ मैं जो हमारी पूरी टीम के लिए मैं शेयर कर रही हूँ, आप उनमें से कुछ अग्री या डिसएग्री करेंगे. बट अल्टीमेटली ये बेस जरूर बनाना है कि फॉर्मेटिव या असेसमेंट फॉर लर्निंग को लाना है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड जैसे हमने कहा, वैल्यूज, नॉलेज एंड आवर स्किल्स शुड बी एम्बेडेड. और डेवलपमेंटल कंटिन्यूम को समझेंगे. लर्निंग सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं है कवर टू कवर खत्म करना. हाउ वेल विल माय लर्नर्स बी एबल टू यूज from one stage to another their own learning and further enhance their being productive citizens, little citizens or grown-up citizens. And our focus is assessment for learning, और higher order ही करेंगे, क्योंकि lower order सिर्फ अगर थोड़ा देखें तो हम एवरेज करते करते शायद कहीं हम बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं खुद भी, कि सिर्फ इतने परसेंट करेंगे, इतना अपने स्कूल में इतना करेंगे क्योंकि रिजल्ट दिखाना है. बट अगर प्रोसेसेस ठीक कर लेंगे, जो 2 दिन से रीटा मैम और कल्पना मैम, सिर्फ मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी, दे आर गाइडिंग अस टू रेज द बार्स इन द क्लासरूम, इंटरप्रेट द करिकुलम, improve your pedagogy. और वो कोई मुश्किल नहीं है, because when I was reading your comments, the hunger, the kind of statements everybody is given was so beautiful, and therefore we are, redesigning every day's presentations for you. And we must look at entire school system. Usme teaching learning processes to optimize learning. It means not just the cognitive area, but the effective communication, health and wellness, ethics, aesthetics, values, all are to be embedded. अब ये 5 step, I would like to tell you, have given me so much to think and work on. How about you all? Do you think once we put it as a framework कि कल्चर चेंज करना है और असेसमेंट पॉलिसी बनानी है तो ये पॉइंट्स हम लेंगे? 1 minute for this.
अब assessment as a tool to promote, मैंने ये वाली slide with a purpose, हिलाल सर ने इसी से शुरू किया है कि assessment comprehensive होते जा रहे हैं. जब हमारे बच्चे 3-5 और हम में से, और वो सेल्फ है, अगेन आप सफल के पोर्टल पे अपने आप को, if you are going to register yourself and you are going to get the responses and you will be part in this growth. Imagine how I am sharing experiences. The responses we got were children on day one a little, awed by it. But it took them 10 minutes and they were flying with it and they were saying they finished it and how they enjoyed and asked what the next is. So the steps to, and what are the components that will be there in the school examinations for 3, 5, and 8? It will be to test achievement, which is age appropriate, with basic learning objectives and outcomes, and application of knowledge in the real life situations. The questionnaires might be in the format of MCQs, but the setting will be where they will be dealing with issues, solving them, giving solution and probable answers for that. It will be based on a lot of literacies that they will be adapting, reading, mathematical, or other literacies defined. And therefore, the jargon, the language will be helping them to become, as we say, cognitively bigger learners. I always use their brains will grow. And you may correct me, please. This can be an emotional outburst. It will be a diagnostic assessment. Diagnostic assessment sets the tone for other assessments. And it also sets the tone for higher standards, because diagnostic, formative, and summative gives the whole of the standards, whether it is at school or whether it is at community or whether it's any other level. And it will be focusing on the all-round development of the students. It will help the teachers to guide their own instructions, help students to improve their learning with the feedback that they're going to get. And it is going to summarize for us and the policymakers the quality of learning and the changes required, the trainings required, and the modes of actions that are to be taken up by all of us. When we will be doing it, सबसे बड़ी shift है balance of formal and informal. We'll have to also give importance to less formal. Less formal, unstructured, open-ended, participatory. चाहे आप उसकी कोई भी definition करें, which I will be sharing in the coming session. थोड़े से informally structured questions. The informally structured questions which are observable. And observable they become जब learning outcomes हों. Competency, or I always say learning outcomes bring out visible learning, क्योंकि वो carry करते हैं सब लोग, especially children, and they exhibit in the real life situations. And kabhi we will allow them to co-construct learning teaching with us. और वो कैसे होगी, I'll share with you few of the practices. Opportunity of peer and self-analysis as part of the portfolio, and variety of testing tools, assessing tools. We move on to even more structured, what might be a class test, checklist, practical, project work, case studies, but they always there's a fluidity between assessment of learnings, assessment for learning, assessment as learning. It depends on a teacher how she uses that valuable content material, valuable process material, valuable outcomes in all the three domains, whether she like to keep it for the assessment for learning, or she like to add on into summative by making, as we have in our CBSE, 20 internal, 80 external. Do they have that kind of structure? And then we prepare them for performance tests and standardized tests and aptitude test or any public test they like to take. When we are agreeing on these four, what are the problems that you see? पहले तो आप agree करते हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक assessment में joy नहीं आएगा और innovation नहीं आएगी, it will not be possible for us to ourselves look at the possibilities in classrooms. And assessment as part of our everyday being. Can I ask you this? What are the difficulties? And do you agree to this?
that we have to balance and blend less formal and more formal. Once we agree, we've seen National Curriculum Policy 2020's aims and objectives. We've seen it is well processed. The resources are available to us for references. Let's, in our own way, start understanding purposes of assessment. The first purpose always is, and it should be primary, because it's a partnership. Assessment for learning, a teacher takes an kind of insight into her own teaching learning. And this is where she sees whether she's going system-based or she's just going abstract in a journal way. Bloom's taxonomy is a great guideline for setting up the tone for this. And the feedback she shares with the student, instead of just the norm-based marks के बजाय criteria define करते हैं. And as I have learned from myself, and I share always, Bloom's taxonomy helped me a lot. But then there are other taxonomies. Ma'am was sharing De Bono's hats. There are so many of solo taxonomies there. It's up to us which one we like to take. But Bloom's is comfortable because it helps both in teaching, learning, and assessment. Then we move on to assessment as learning. Assessment as learning classroom process है, where you develop plenaries. किसी भी तरह से आप हर रोज एक लेसन करते हैं, उसके एंड में 5 से 2 मिनट रखते हैं या 2 से 5 मिनट रखते हैं, जिसमें आप कहेंगे कि आज क्या सीखा. और इतने सारे इसके लिए अच्छे क्लूज हैं. Thumbs up, thumbs down, red light, yellow light, green light, where you're raising the questions. You're giving them 1 minute, 1 sentence, a learning outcome, yes or no. And that is how assessment as learning gives you the framework, gives you the direction for next day. So the progress or purpose is being achieved that each learner is part of learning instead of waiting for a week, 10 days, or end of the topic or end of the concept. This has helped me a lot in defining my learning plans and my lesson plans. An assessment of learning, summative. Now, from now on, when I was reading NCF also, from now onwards, let's commit कि summative को सिर्फ एक one paper test नहीं रखेंगे. Summative को भी हम एक, जिसे कहते हैं, एक पोटली बनाएंगे जिसमें हमारा assessment for learning के थोड़े से होंगे जो हमने continuum skills रखी हैं, थोड़ा सा assessment as learning के portions भी होंगे. On end of the term, end of the session, examination को भी joyous बना सकते हैं, क्योंकि कल्पना मैम हमें याद दिलाती हैं कि अनीता करुण मैम जब कहते थे वो कहते थे 9-10 छोड़ दो, 1 to 8 तो आप लोगों के हाथ में है. We can work it in that phases so that by the time they come in 9th, they're ready and they're working to take up all exams which is competency focused. My request to you all, quickly tell me, how many of us apply assessment for learning, assessment as learning, and assessment of learning in our classes and make it as part of the joyous classroom halla gulla? Just a brief, we all have been doing it. Let's try to understand from few perspectives, which we will develop later. कि formative assessment क्या है? Assessment as learning क्या है? Assessment of learning क्या है? Formative assessment should be criteria based because it's an informed instruction. An informed instruction is about learning outcomes defined and how many of the students have been able to achieve those outcomes, which are visible through the competencies. We must work on the variety of tools. How many tools are we giving? Is it only one kind of project everybody is doing? One kind of activity everybody is doing? Everybody is only taking quizzes? Or there are multiple ways of assessment?
or we are forming the assessment, what we are learning through these variety of tools. It engages teachers and it helps in differentiated instructions because it has its score as feedback and reference, not just the marks. और अगर मार्क्स भी है तो उनको ग्रेड पॉइंट्स की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए या ग्रिड पॉइंट्स की होनी चाहिए, सिर्फ पॉइंट्स की होनी चाहिए, डिस्क्राइबिंग द कंटिन्यूम ऑफ अचीवमेंट. असेसमेंट एज लर्निंग भी क्राइटेरिया बेस्ड है क्योंकि whenever you are doing outcomes in your class on everyday basis, it is bound to be criteria based because learning outcomes have the criteria defined. It gives you opportunity to critically analyze whether today's class, what I have taught, is being taken up by the learners or they have their own learning limitations, expansions, some of them are gifted. And majorly it is student driven and it should go on throughout. Summative assessment भी थोड़ा सा redefine करेंगे क्योंकि evidences जो हैं वो judgment के लिए होते हैं. अभी मेरे को शायद गीता मैम ने कहा एग्जामिनेशन और असेसमेंट में क्या फर्क है, तो ये फर्क है कि summative assessment generally judge about a student's achiever as contrastive to a larger group. आपकी क्या रैंकिंग है, आप बड़े ग्रुप में कहाँ है, वो पर्सनलाइज से हट जाता है. And report of evidence is to be shared by all. But इसमें भी क्या हम वैरायटी कर सकते हैं? Can I make my portfolio which is all the year relevant? Can I have a project that runs for 2 terms? And that project could be creating awareness about special needs and defining through my knowledge of AI and making a dustbin which is sensory. So anyone who has special needs and goes to a market doesn't have to face the difficulty and have to throw the things out, go near the sensory dustbin, and the inclusion or the support will give him or her the kind of, I always say, happiness of being part of the bigger picture. And this compares assessment information to all. This is the difference between the summative or examination and the assessment. Anything that you want clarity on it, please do not hesitate. There is this slide for a minute, and we are focusing again and again on the various factors for all the 3 assessment for learning, क्योंकि आज assessment ही है, assessment as learning and assessment of learning. So अब चलते हैं constructive alignment. ब्रिग्स ने जब ये दिया था और हॉटन has expanded it, इसका कहने का मतलब है कि हर जो धागा है कड़ी का या हर जो लिंक है कड़ी का वो जुड़ना चाहिए. करिकुलम जुड़ना चाहिए, पेडागोजी जुड़नी चाहिए, असेसमेंट जुड़नी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ना चाहिए. Everything that can make whole school alive should be interconnected. वो कैसे होगा? Any idea? Anybody has read about constructive alignment? Sorry, a typing error. Please avoid. Please overlook my typing errors. NCF define करती है इस alignment को. NCF says that vision of society, vision of education, defined in the aims of education, attainable through desirable values and disposition, capacities and knowledge, and then further, it is divided into various curricular areas through culture and processes. So aims to be fulfilled is about deeper learning, and knowledge, it is about knowing that. What is it I am doing? Why am I studying maths today? Why am I doing languages? It is descriptive knowledge. Whereas capacities are procedural knowledge. How I will know that? How am I going to reach to that standard that's defined? And if I'm not there in the top in one, is there anything for me in somewhere else?
And values are our beliefs, which we use to shape right and wrong. Attitudes develop the perception, and then our behaviors are modified. So this is how NCF and aims of education and knowledge, my humble request would be, ये NCF में available है. Definition of knowledge, definition of capacities, definition of assessment, approaches बहुत ही अच्छी तरह से define की गई हैं. ये आप अगर देखेंगे खोल के, क्योंकि अब मैं I will be sharing with you most of the things from the page number reference. How is it defined? It is curricular goals are given to us. Competencies, which are learning and observable achievements, are defined to us. Competencies are defined to us. And outcomes, which are interim markers to observe, track, and respond to the learner needs, are given to us. अब quickly, हम में से कितनों ने वो 600 plus pages की NCF को at least एक बार खोल के देखा है? हम में से कितनों ने देखा है? Because when I'm going to share the next slide with you, page 111 onwards, aims, domains are defined to us. So जो transformation है और हम decode कर रहे हैं, where would we find the domains or the areas? How the curriculum and the curriculum parameters will be defined. So it is, I'm sharing with you, it is given to you in the form of the domains, broadly, which are stated here. It is physical development, social, emotional, and ethical development. I have named it as SEED acronym. You may please use yours. It is for cognitive, language and literacy development, aesthetics and cultural development. These are the broad areas, and it has further been divided into competencies and outcomes. Then we have the curricular goals with specific subjects, the competencies and learning achievements, which are observable and assessed systematically. If you open page 111, you will see all that I'm sharing with you. And learning outcomes are based on developmental continuum. And this is for each domain. Agar 5 plus 3 plus 4 level per, what is the development continuum in language, in mathematics, in sciences, in social sciences, all is clearly defined for you. And we have the curricular goals to attain competencies. Values are also clearly defined. It is about ethical, moral, democratic, and epistemic, which is knowing the value of our knowledge. The skills, the capacities to act skillfully, aesthetic, cultural capacity, capacities for health, sustenance and work, capacities for social engagement, inquiry, communication, logical reasoning. All this is given to you, I repeat again and again, with definitions and descriptions. I hope you've seen it. I'm just keeping the slide here for 30 seconds. That if you decide to open from page 111, you'll start seeing all these available to you. Or this is my one of the favorites. Page number 60, sampling of competency. If you're looking at your children or your students converse fluently and can hold a meaningful conversation from age groups 3 to 8, the continuum is defined to you, the outcome is defined to you. And I have just taken one snapshot, the whole page is there for you. Right from listening attentively to maintaining the thread of conversation, right from expressing the needs and feeling to getting into discussion, the continuum is defined for you. Like, again, one question. How many of us have referred, seen, have flipped through? And this is where we decided to, whatever doubts were coming yesterday, how in Nippon
Bharat key competency learning objectives for grade 1 is clearly defined. The developmental goal 2, children become effective communicators, breaking up of the ECL of language 1, language 2, language 3. It gives you the core competencies. It defines the codification of learning outcomes and also the description of the outcomes. I am going to spend few moments here because I want the comments whether this resolves some of the issues of understanding the standards and the referral for it to bring in your own policies, PDCA model to be made. I'm going to spend half a minute for this, waiting for your comments. The NCF document, we can see that a lot of them have read. Ji ma'am. And one also very honestly admitted 20% read. So a lot of people have been reading it. Yeah. Superb. So that makes it, then we are connecting our dots together because their feedback, their questions will help us also see whether we need to give few more inputs to share with, or we can always, redefine things for them. So अब standards पे आते हैं. पहले मैम ने तो कह दिया कि खौफ नहीं है, सच्ची सच्ची बोलिएगा अभी भी कितना खौफ है, क्योंकि हम लोगों के लिए सबसे अच्छा जॉयस कल्पना मैम अग्री करेंगे ये था कि खौफ नहीं है, और वो हमारी अपनी डिस्कशन टैगलाइन है. So we are going to just to share with you the process once again. ये हम आपको regularly बता रहे हैं सारे. पहला self assessment by the school through the SQAA framework. Once you've identified your maturity level, you form the core teams, you give the roles and responsibilities, you identify the areas of work, you set up the procedures for it, and you plan your developmental school improvement plan. Once you've done it, you start implementing it, but you do not forget the 4 R's in PDCA model. Because एक बार कर और end में करने से फिर वही होगा, we are not comprehensively growing it. Once we have done it, once we are on it, आपसे शेयर कर रही हूँ ये करिकुलम पेडागोजी और असेसमेंट 1.6 का आज हम 1.6.2, 1.6.3 और 1.6.4 को टच करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली. I am again spending a half a minute. Any question related to it, please put it in the box and we'll try to share what we've understood, or others, we'll encourage others to share the response. Share with them their own understanding and put the response in the chat box. Ways to move, 4 R's हैं, levels of maturity हैं. ये बिल्कुल भी फिक्र नहीं करिएगा कि लेवल ऑफ मेच्योरिटी 1 पे है, 2 पे है या 3 पे है, 4 पे हम नहीं हैं अभी. ये मैं क्योंकि हम लोग कुछ पायलट कर चुके हैं, कुछ डिस्कशंस हो चुकी हैं, हमने अपना सेल्फ असेसमेंट भी किया है, तो 4 की एस्पिरेशन ही रखते हैं. और विद द रिस्पेक्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स टुडे, वी आर टेकिंग इट विद ओपन हार्ट दैट हम सब लेवल 3 पे हैं. पर लेवल 3 के लिए मैं आपसे शेयर करूंगी, ये ब्रीफ है, सिर्फ सेटिंग द टोन, क्योंकि आज हम असेसमेंट समेटिव बहुत कर चुके हैं, बट क्योंकि पूछा गया था तो हम टीम ने पूरा सोचा कि इसको टच एंड गो करेंगे और इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ज्वाइन कराएंगे. तो ये कीवर्ड है आपके लिए. आज अंजलि मैम हमें कह रहे थे खिचड़ी क्या पकाई है फॉन्ट्स की, बट हमको लगा क्योंकि कई पिछले बार जब हमने किया तो फॉन्ट विजिबल नहीं थे, तो हमने कीवर्ड्स निकाले हैं जो हमारी समझ से भी कीवर्ड्स हैं.
ये कीवर्ड्स की चेकलिस्ट बन के टिक होनी चाहिए. That if you are at level 3, all these should be there for you to share with everybody. Or I'm not going to deliberate much on it because it's available to you. This is just to start the process. जब आप 4R apply करेंगे और maturity levels देखेंगे, तो please pick up the keywords as per your context. ये नहीं सोचिए कि expect कौन कर रहा है. We are going back to the principles and spirit of SQAA today. आपको जो लगता है आपने वो पिक करना है. आपका अपना स्टैंडर्डाइजेशन है. आपका अपना ड्रीम है अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपने बच्चों के लिए और देश के लिए. Nobody is pressurizing you. कोई जज करने नहीं आएगा. But this is, you may begin from 4 and then decide that this can iteration हो सकती है और ये levels और बढ़ सकती हैं. We are looking forward for that too. Kalpa ma'am, am I right about it? That's why Yes, ma'am. Yes. That's why we've been trying to share with you that कुछ भी written on stone नहीं है. ये एक journey है. जितने जुड़ेंगे शायद हम लोग उतने I think we'll be able to do the definitives. अब कई लोग डर जाते हैं कि आपने ये इतना सारा बड़ा बना के दिया है. क्या है ये, हमको सारे देने हैं, सब दिखाने हैं, हमारी रेटिंग कैसे होगी? Again we go back to the standards. We go back to the mission, the vision of SQAA. ये आपका है. हाँ, प्लानिंग जरूरी है. जो एक स्ट्रक्चर है वो टेक्निकल रखेंगे. एक सिर्फ आप ये सोचे कि हमने अपने पोर्टफोलियो अपलोड कर दिए. वो पोर्टफोलियो अपलोड करने से पर्पस ऑफ विजन, मिशन, स्ट्रैटेजीज, वो कुछ भी उसका बैकअप में नहीं है. किस तरह का असेसमेंट प्लान्स आपके हैं, असेसमेंट की एनालिसिस का क्या है, आपका चेकिंग मोड क्या है और उसके बाद का एक्शन मोड क्या है. अगर ये साइकिल ऑफ पीडीसीए नहीं आएगी तो फिर वो again we fail. Again I would use the strong word. Then again we are not reaching to any goal. We all would be again non-standardized achievers. And then we will have variety कि उस पॉकेट में वो बहुत अच्छा है, दिल्ली में ये बहुत अच्छा है, पंजाब में ये है, down south, east, west, we will be successful in pockets, and then the whole nation, the whole plan that NEP brings in will again be somewhere struggling. आप इसमें से जो भी आप देखें आपको पता लग जाएगा प्लानिंग में क्या चाहिए, डूइंग में, क्लासरूम एक्टिविटीज में, वेरियस स्कूल प्रोसेसेस में, प्रैक्टिसेस में क्या होना चाहिए, वो प्लान में कैसे डालना है. अगर कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग को कैसे बनाएंगे, उसके हम चेकिंग रूब्रिक्स कैसे बनाएंगे या चेक पॉइंट्स या चेकलिस्ट कैसे बनाएंगे, और हम फर्दर एक्शन की रिफ्लेक्शन क्या रखेंगे ताकि हमारे पास आगे जाने के लिए इंप्रूवमेंट प्लान फर्दर हो. I want you to please put in the chat box anything you want clarity about it. And do we set today for you how to use the standards and the suggested documents to support your maturity level and sharing it with all. Therefore, हम सब के सब आखिरी दिन तक PDCA 4 hours और प्रोसेसेस करते रहेंगे आपके साथ. अब हम आते हैं डिकोडिंग स्टैंडर्ड्स में, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग. कई जगह असेसमेंट ASL में भी आती है और कई जगह, क्योंकि स्पीकिंग में कंफ्यूज होते हैं, बट AOL भी होती है. अगर हम लेवल 5 पे हैं तो NEP, NCF 5+3+4 करिकुलम गोल्स भी हैं, पेडागोजी भी है, कॉम्पिटेंसीज भी हैं फॉर असेसमेंट. हम इसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं? फिर कई बार ऐसा होता है हमने सारे अचीव करने हैं ये, और हर जगह NCF में लिखा है इट इज टू बी अडेप्टिव. आपको जो ठीक लगता है आप वो लीजिए, अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने हाई स्टैंडर्ड्स को रखिए. वैरायटी ऑफ FAs, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पॉलिसीज हैं उसकी. लर्निंग प्रोग्रेस कंटिन्यूम कैसे डिफाइंड है और अचीवमेंट कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में नंबर दे रहे हैं
or are we also expanding to competencies, values and attitudes? और कंटिन्यूम डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कितनी एक्टिविटीज हैं? क्या हम इंक्वायरी बेस्ड रख रहे हैं कि जरूरी नहीं है उसका एक एंड हो, बट बच्चे का लर्निंग प्रोसेस हो गया और वो एक डिसीजन पे पहुंचा है. मैथमेटिकल एबिलिटीज में सबसे अच्छा आता है जब वो मैथमेटिकल जर्नल लिखते हैं और जनरेशंस ऑफ क्वेश्चन इंप्रूव हुई है कि नहीं. क्योंकि अगर हम अपनी क्वेश्चनिंग और आइटम क्रिएशंस देखें तो वी ऑलवेज फील कि थोड़ा और हो सकता था. I could have challenged my learners more. I could have used the creative competency-based questions, added on in the MCQs the possibility of reasoning and assumptions, right from the grades primary to the secondary and middle and secondary. Data collection हमारा एक simple data collection हो सकता है कि I'm going to see how many of my students independently speak about certain things. चाहे वो आप कोई भी बोले, in among people, bring the people from outside, bring the parents to have a conversation. How much are they doing it and what kind of data am I collecting for that? And am I processing my teaching and learning using it? IEPs कितने planned हैं, monitored हैं, and how many of the achievements I am framing in LOS? Kindly pardon the typos, please. ये exchanges में भी थोड़ा हो गए हैं. And whether I am looking at the continuum of performance through opportunities and analysis. क्या मैं उतनी opportunities दोबारा create कर रही हूँ कि एक बार एक test हो गया, उसके बाद उस बच्चे का end है, he is or she is deemed as average. Or am I creating more opportunities saying, I see this, you can you, and I'll add this in the further evaluation. Friends, I want your comments for it. We agree to this, we disagree to it, and we will define the areas of development, concern, difficulties, so that we can crease them out. We can clearly move on the path of whether 1 step, 2 step, 3 steps improvement. It is all in our hands. And once again, I'm sharing with you the possibility of decoding. तो सबसे पहले तो इसमें assessment policy ही चाहिए और plans चाहिए. फिर roles and responsibilities होने चाहिए. Rubrics criteria होना चाहिए. If we're doing AFL, तो हर चीज के लिए rubric और criteria बनाना है. फिर classroom में जो हमारी teaching है board and chalk and talk के बजाय, we have all these variety and we can use technology also. आजकल I'm sure we all want these games and debates and presentations. So can these be part of our action? And can we develop portfolios and anecdotal records based on this? And can we monitor and review the practices? With the records that we have, or remedial classes, or the reflection of growth, or the students' performance in various continuum defined by us. अब एक बार फिर से प्लीज बताइएगा, खौफ कुछ कम हुआ, ज्यादा हुआ? एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनपुट ये खौफ पे है जी फ्रॉम सुखमनी स्कूल. सो दे से दैट खौफ तो पता नहीं लेकिन बटरफ्लाईज जरूर है. चलिए फिर तो अच्छा है मैम, फिर तो फ्लाइट रेडी है. बटरफ्लाईज हैं तो फ्लाइट होगी. Are you able to decode the standards? Are you able to understand that it is not something that सभी को सब करना है, but आपकी maturity level, आपका context, but PDCA जरूर याद रखना है. चाहे उसमें आपने 2 पॉलिसी डाली हैं, एक्शन प्लान भी आपके जो प्रैक्टिस में है, क्योंकि उसको भी देखना, एक मिररिंग योरसेल्फ इज आल्सो अ ग्रेट जर्नी. उसके एक्शंस क्या होने हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. चेकिंग क्या होनी है, ये साइकिल चलती रहनी चाहिए. और प्लीज आई अगेन से,
ये कोई ये नहीं कि पहले P होगा, फिर D होगा, फिर C होगा, फिर A होगा। आप कहीं से जहां आपको लगता है आप शुरू कीजिए। कई बार पॉलिसी रेडी है आपके पास. You like to do the things in action and change the things. You like to act on through monitoring and checking. That is up to you. We look forward to your comments about decoding the standards because हमारे लिए बड़ा जरूरी था. Kalpana ma'am had been saying this to us and Anjali ma'am has been asking that जो raise हुए हैं issue, we must talk about them. We might not be able to answer you all of them. और स्किल के तो मैं बार बार कहूंगी निपुण जरूर देखिए, फाउंडेशनल देखिए और एनसीआर देखिए. आपको हमसे नहीं चाहिए. I don't think ever before somebody had mentioned HPC. आप वो वेबसाइट खोलिए और रिसोर्सेज में जाइए और ये definitions देखिए. You will be so glad to see how systematically it's been given to us. There is no mumbo jumbo. It's also process and system driven. Again, बाकी जो भी हो PDCA जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे. प्लानिंग में कैसे लाए हैं, उसमें आपका विजन है, आपका मिशन क्या है, किन किन को एंगेज करेंगे, ऑल स्टेक होल्डर्स तक कैसे जाएगा, उसका आउटपुट क्या, आउटकम क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम, फिर हम उसको प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे, किस मोड में मॉनिटरिंग और चेकिंग होगी और रिव्यूइंग होगी, ताकि हम फर्दर एक्शन लें और ये कहें कि माय स्कूल इज बेस्ट वेयर इट इज to be. My school is best in terms of creating innovative exercises, innovative activities. Innovation is core of my school. और जब आप इनोवेटिव होंगे तो पीडीसी शायद ऑलमोस्ट साल भर में 6 बार होगा. एंड एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू सी द चेंजेस, और उसके लिए खुद को इमर्जेंट रखना जरूरी है. So we are very proud of completing the curriculum booklets and sharing the complete curriculum booklet. But with NEP, the joy is of developing it, layering it through continuum. अब हम सब ने अपने आप को लेवल 3 पे ले आए हैं. मैंने जैसे कहा हम मान के चलते हैं सब हैं, हम लेवल 3 पे हैं और अब लेवल 3 पे आ गए तो कीवर्ड्स लिए और देखा कहाँ प्लान करना है, कहाँ we have to take the doing things, एक्शन किस तरह के होंगे और चेकिंग किस तरह की होगी, आफ्टर एक्शन और बिफोर एक्शन चेकिंग होगी, फिर एक्शन होंगे. All these processes we are going to have a group working process. We create groups to analyze, create and present the understandings of subdomains, and we can choose any one of the standards in case we are, stressed or we are awed or overwhelmed by multiple standards. And then we start working on self-reflection and prepare the strategies for improvement as per 4 hours. And then each group can be given the following methodology for presentation. Each group will have subgroup where subdomains will be allotted. We'll connect the process to documents. कि हमारे पास कौन-कौन से अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है पीडीसीए फॉर्मेट के, और डॉक्यूमेंट्स के कौन-कौन से एविडेंस प्रेजेंट करेंगे ताकि हमारा पीडीसीए फॉर्मेट एंड विजिबल, जिसे हम कहते हैं एविडेंसेस हों. तो कोई भी जब उसको आप करेंगे और आपका रिव्यूज आएंगे, यू पुट इन फॉर एवरी एस्पेक्ट, एवरी स्टैंडर्ड. एंड देन वी स्टार्ट मेकिंग, वंस हमारा रिव्यू आ गया, we work on our improvement plan. And further, after checking the improvement plan, again we act. Now, with it, we move to the next level. जैसे मैंने कहा था, we all agree कि इतने साल की प्रैक्टिस है और हम तो कर रहे हैं ना ऐसा. ये लाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगती है हम सबकी. कर तो रहे, हम ऐसा ही करते थे और ये होनी भी चाहिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस कनेक्टिंग द डॉट्स ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट विल गिव अस अ ब्रिलियंट फ्यूचर. तो पॉलिसीज हमने बनानी है 5+3+4 के डायरेक्शंस पर.
And we already have curricular goals, we have pedagogies defined, competencies and assessment defined in NCF, and variety of FAs. So ग्रुप ने डिसाइड किया केवल फर्स्ट तो ही जो की एरियाज हैं जो लेवल 4 के हैं they will work on using the PDCA. Instead of looking at all, white में जो हैं they will take up later, but the blues ones they're taking up immediately. So when they're taking up immediately, आप मेरे को PDCA सोच के बताइए प्लानिंग में क्या करना पड़ेगा, डूइंग में क्या करना पड़ेगा, चेकिंग के लिए क्या हो सकता है इन दोनों में, और फर्दर एक्शंस क्या हो सकते हैं. 1 minute, because we are a team today, and what would you, when I say that you are the member of the core team, and together we will be making the assessment plans, we will making the pedagogical plans and the curricular goals as targets, and we will work on variety of formative assessments or assessment for learning. पहला प्लानिंग में क्या क्या आएगा, डूइंग में क्या क्या डालना चाहेंगे, मॉनिटरिंग रिव्यूइंग के लिए क्या डालना चाहेंगे, और फर्दर एक्शन में क्या होगा, उसके टेम्पलेट कैसे होगा. एरिक्सर जी में ये भी अवेलेबल है, स्कोआ में ये दिया गया है. Kindly refer to it. Again, this is how we maintain the data and we maintain the progression. And we look at the outcome and we look whether we are going in the direction that we've planned. So सबसे पहली चीज जो मैं प्लानिंग में मेरी इंटरप्रिटेशन है, और आप मुझे, if you don't agree to it, please go ahead and say it. If you agree to it, please put in your thumbs up. पहला तो referring to development continuum of curricular goals given to us, competency goals given, and the development outcomes are given, the learning outcomes are given, all three are interrelated. तो constructive alignment को sequence में कैसे लाएंगे हम? अक्सर हम क्या करते हैं, learning outcomes लिखकर हम फिर अपनी activities पे जाते हैं, फिर end में सोचते हैं कि इसमें हम assessment या assessment for learning, assessment as learning के लिए क्या evidences बनाएंगे. तो एक छोटा सा shift है, और ये भी theory है, and if you Google it constructive alignment, ये आपको आराम से मिल जाएगा. वो कहते हैं आप अपनी प्लानिंग में, जैसे मैम भी कल कह रही थी, आप कैसे डिजाइन करते हैं, बैकवर्ड करते हैं, या आप उसको यू डोंट वांट टू डू इट इमीडिएटली, वी लीव इट टू यू. बट मैंने अपने आउटकम्स में देखा और अपनी लर्निंग में देखा है, once I have picked up the learning outcomes for my competency, if I work on designing for alignment my assessment tasks, and I make sure that any assessment task that is not measurable, SMART, I will omit it using the scale of SMART. Because again, reviewing, monitoring will not be possible of abstracts, generics. And then I move on, strategies where the outcomes, assessment measure and in place, and we engage our learners through motivating and challenging teaching learning activities. And this is mainly for our achievement of identified learning outcomes. I want you to tell me whether you think this is doable, and do you think it will bring in the planning setup for lesson plans? Will it support your planning for lessons, classroom, FAs, assessment of learning? So पहले alignment है, curriculum हमने कर लिया. Now next is classroom practices कैसे लाएंगे? So simple है, outcomes, activities, feedbacks और assessment tasks को align होना जरूरी है. Constructive integration सबसे पहले है. तो individual student, we construct learning through appropriate learning activities
which also produces emergent learning outcomes. I have been requesting this. Learning outcomes can be iterated, they can be adaptive, they can change. We need to, once we've done this, we are guided by intentions of learning outcomes. We also, in this process, we have add value to the learning outcomes once we support them through assessment criteria and align assessment. So once we have done the individual stuff, we've constructed the learning, we have individual students in mind, the personalized learning to a variety of possibilities and opportunities. We do the appropriate learning activities. We work on emergent curriculum with a partnership with students. We have the assessment criteria defined for various competencies, and we have the aligned assessment for further valuing and adding to the learning outcomes. This is the cycle that we need to maintain, and this is also available for your reference. But एक quickly मैं आपको देती हूँ कि उसमें assessment कहाँ था. Learning cycle class में हो गई, फिर planning से शुरू करते हैं. Once we have with the programs of study, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं. The best part of it is you don't have to begin. हमको clockwise जाना है, anti-clockwise जाना है, किसको पहले लाना है, कई चीजें in place हैं आपकी. The study plans will tell us what the students want to learn. We plan on how they're going to learn. For that, we develop the criteria, indicators, and examples. How we are going to collect the evidences. What kind of sets we are going to use for the evidences, whether written, oral, learning logs, performance tasks, projects, or tests. And what activities will further enable learners to incorporate these in their daily schedules, go anytime, anywhere learning. How are they going to demonstrate it? Will they be doing through the feedbacks? And will the feedbacks be descriptive, specific? Will we engage all the stakeholders? And we will become the facilitators. And we will see how we send these as feedbacks. It's a compilation of formative and summative. We have both with the marks, grades, and grade points, or there are some descriptive also sharing anecdotal notes. How are we going to help them be part of it through self-assessment also, added in the summative or formative assessment? And we move on to teachers as the right to share what is to be further taken up. I want you to tell me whether this cycle, this integration is easy or difficult. So first thing, when we are decoding, we are aligning, we are constructing the alignment of all that we've been wanting to do. अब continuum कैसे होगा? तो page number 111 से आप चल दे. If you will go, you will find the answer to it. और मैंने एक छोटा सा example लिया है. Pre-reading stage kindergarten to grade 1. Early reading stage is grade 1 to grade 2. How will we plan our curriculum? Curriculum goals, pedagogical practices. If you remember, the first standard ticked, or the team has chosen this standard to work on for stage 4. Very clearly defined. I'm not going to read through this because it is available to all of us. So how you will use textbooks as tool, keeping in mind these continuums through the competencies, curricular goals and outcomes is the magic you will do. Maths के लिए भी दिया गया है. I will take 30 seconds of yours. I want you to read it on your own. And I hope it's visible because as I shared, ये खिचड़ी हम लोगों ने इसीलिए बनाई है. हमको लगा aesthetically शायद देखने में सुंदर ना लगे पर वैल्यू कर रहे हैं. Are you able to read this slide, please?
Yes, ma'am, it's visible. थैंक यू मैम. सो कंटिन्यूम पे दिए हैं आपको करिकुलम को रीडिफाइन कैसे करना है, करिकुलर गोल्स कहाँ से लेने हैं. सो फर्स्ट प्लान ऑफ करिकुलम प्रेजेंटेशन एट द लेवल 5+3+4 हो गया. टीम ने काम करना है, अपने कॉन्टेक्स्ट में लेना है. फिर असेसमेंट पॉलिसी बनानी है. सबसे मुश्किल ये लगता है कि पॉलिसी कैसे इसको डिकोड किया जाए. सो आई एम शेयरिंग जो हम सब की जितने भी लोग यहाँ हैं उन्होंने सोचा कि एक लेट्स मेक वन सजेस्टिव लिस्ट. और ये कोई रिटन ऑन द रॉक नहीं है, प्लीज ऑन द स्टोन भी नहीं है. आप इसको अपनी तरह से कर सकते हैं. ये प्रिपरेटरी स्टेज के लिए हमने डिफाइन किया है, मींस 3 to 5 ग्रेड्स के लिए, की स्टेजेस के लिए. वी पिक्ड अप द डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स. पूरी टीम ने एग्री किया कि असेसमेंट किस तरह का होगा. ओरल भी होगा, रिटन भी होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड भी होगा. इसमें वी ट्राई टू इंटीग्रेट ऑल. जैसे कोई कहता म्यूजिक के लिए दीजिए, स्पोर्ट्स के लिए दीजिए, वी ट्राई टू ब्रिंग दोज ऑल्सो being the part of our assessment. Then we also brought in plans which will help us reach to these assessment goals, strategies for informal and formal assessments in classroom. What kind of plans we'll have, what kind of calendar we are going to have. Will it be informed कि पहले से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाए और informal assessment becomes a formal assessment? Or can it be that because while we're studying, our students are so rich that they're able to take up any of the challenge thrown to them, and we convert those through rubrics, through outcomes, into a brilliant formative assessment where large number of them achieve the most. फिर आया designing of rubrics और 2023 NCF 2023 defined areas और assessment tools को use करते हुए. We also would be working on observation of self and peer assessments as part of our assessment plans and presentations. Portfolios अभी किसी ने पूछा है, ये formative में आएगा, summative में. A brilliant teacher will use everywhere because that is developing. अगर आप सिर्फ ये डिफाइन करने हम लोग फिर से लग जाएंगे कि इसमें होगा और ये इसमें नहीं होगा, then again we are not understanding SQAA at all. And Kalpana ma'am ये सब questions जब लेंगे, and I humbly request because she has the clarity of it. The power of SQAA. Sorry, Kalpana ma'am. Deepa ma'am, I think all of us would be okay with answering together. We are also on the same learning journey. Yes, As we you are. said in the beginning, that we are all learning together, and it's going to be something totally new for the country and for all of us. So let's take the journey together and learn from each other. Thank you, ma'am. So we also are going to work on assessment reviews. तो policy में दोबारा वापस जाऊंगी. Curriculum continuum defined है, outcomes defined हैं NCF में, competencies defined हैं. If I set it for my key stages, हमारी policy defined है, हम ये से अब करेंगे मिलकर, and all the subjects or curricular areas will be doing the same to understand, and the whole child outcomes become visible. And in every lesson, every activity, every non-formal, informal setup, that is our purpose. अब types of tools कैसे करेंगे? जैसे कई, how much of the tools can be? Informal में एक 12-word summary होती है. ये आप सीनियर्स में, मिडिल क्लास में, प्राइमरी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. समराइज योर लर्निंग. और मजे की बात है ये मैथ्स में भी हो जाती है. मैथ्स जर्नल, आई ट्राई टू शेयर वन एग्जांपल विद यू. साइंस में भी होती है. और 3 to 1 बड़ी इजी है. 3 things you celebrate, 2 things that you like to use in real life, and 1 thing you are doubtful about. 3 to 1 की भी डेफिनेशन आप अपनी तरह से बना सकते हैं. तो 3 लर्निंग आउटकम्स में से, all outcomes में से 3 बेस्ट कौन है आपके? 2 you are going to use again and again, whether it is speaking, writing, reading, or 1 that you are worried about. The muddiest point, डर लगता है, खौफ, स्कॉफ, वो कौन सा muddiest point है? और एक आइडिया वेव है. ये मैंने खुद पे भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है. आप एक ask them after completion
that 5 best ideas of today's work. And then when they start with one idea, and it's a non-stop, the wave goes on. The repetitive wave, they both stand up, think alike. We get the association, the class environments improve. So informal assessment, अपनी lesson plan में आप डालेंगे. I'm sure it's going to bring a lot of noise in the classroom and principals are going to have a lot of headache. But let it be. वही तो purpose है NEP का, the joy of learning. Formative assessment में हमने questioning agree की कि अगर हम pen and paper test भी लेंगे तो oral written MCQs और oral को भी include करेंगे questioning में. Or questioning, oral means the questionnaire will be presented to all for oral also, to see whether we are working on the depths of learning or not, or we are working with the teaching to attain the depths of learning. Quizzes, portfolios, self and peer assessment, surveys, student-led conferences, rubrics. We will make all these a part of our rubric. कोई first term में करेंगे, कोई second term में करेंगे, to see in the end and pick up the best one for our students to add on to the summative portfolio. और summative को थोड़ा सा, because मैम ये कहते आए हैं और अंजलि मैम का स्पेशली ये रहता है कि इतना सीरियसली मत लो. So समेटिव असेसमेंट, अभी किसी ने पूछा सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर को फर्दर 20 में लार मॉडल हमको दिया गया है और हमें से कईयों ने सीबीएसई की ट्रेनिंग की है. असेसमेंट क्यूबिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी. स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस टेस्ट के साथ साथ क्या और भी एलिमेंट आ सकते हैं टू ब्रिंग इन फॉर्मेटिव असेसमेंट की? कोई ऐसी चीजें हैं जो समेटिव में भी आ सकती हैं. Not just the 20, but any other project that we want the ending of it. Or we need the culmination, or we need the processing of it. And the last one, कौन से agreements हम करेंगे formative assess के, उसकी definition एक दूसरे को जरूर देंगे. अगर हम, if we are doing the quizzes and tests, तो उसमें क्या क्या रखेंगे, क्या क्या चीजें ले आएंगे. Exit ticket अगर हम लेंगे तो हम उसमें क्या क्या. And again I am sharing with you planning. Planning में सब होने से doing easy हो जाती है. ये प्लान में आया है तो लेसन प्लान में भी आएगा. चेकिंग के लिए भी हमारे पास आएगा कोई ना कोई मटेरियल. अटेनमेंट हुई है कि नहीं, मॉनिटरिंग के लिए भी मिलेगा, अपना मॉनिटरिंग टेबल्स बनाने के लिए. If we are doing a observation and anecdotal notes, so what kind of things we are going to keep there? Learning journals और portfolios कैसे बनाएंगे और सेल्फ असेसमेंट को सेंटर में रखेंगे. जितना सेल्फ असेसमेंट यूजिंग द स्पेसिफाइड लर्निंग आउटकम्स करेंगे, बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे को पता है व्हाई एम आई लर्निंग, व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्कोर, what are the steps and what kind of help I will need from my school, from my teacher, from my principal, from my parents, from my community. All this is part of the planning, embedded in doing, embedded in checking, and then acting further. I want, do you agree to this? So सिर्फ एक प्लान, कई बार हमने देखा है एक पेज का प्लानिंग भी आई है. And we really thought that either the school is absolutely clear on what is to be done and shared, or again, we need to look at, read the NCF, NEP objectives, we need to work on it. Do you agree to this? And do we help again in decoding for you the HOF? ये पेज नंबर 368 पे फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक सैंपल और ग्रेड 10 के लिए है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ग्रेड में बोर्ड में क्या आएगा, और ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है. मैंने पेज नंबर भी इसीलिए लिखा है, 368 एनसीएफ में है ये. अगर आप एक केस स्टडी के बेस पे कर रहे हैं और वो एक एनवायरनमेंट पे पैराग्राफ है, मैंने नहीं किया क्योंकि वो फिर विजिबल नहीं होना था, बट ये आपको पेज 368 367 में मिल जाएगा. Formative assessment in the senior classes is based on content, process, expression, and views.
And that is the clear indication of levels of learning and levels of engagement. I would pause for 30 seconds and allow you to see whether you've seen it. And if you've seen it, now it gives you courage to take up the score further in planning, in classroom practices, in defining your assessment practices. Tools and techniques एक बार ये प्लीज आप देख लीजिए. अगर टूल्स क्वेश्चन है तो इसकी टेक्निक्स असाइनमेंट भी हो सकती है, क्विजेस भी हो सकती है, सोक्रेटिक मेथड से प्रोजेक्ट में भी आ सकते हैं, डिबेट्स एंड एलोक्यूशन में भी आ सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन है तो भी टेक्निक्स आप कोई भी ले सकते हैं, और टेस्ट इन्वेंटरीज, चेकलिस्ट, ये सब इंटरवोवन है. वी जस्ट वांटेड यू टू डू नॉट फील दैट इट इज नॉट इंटरवोवन. और एक करेंगे तो दूसरा नहीं कर सकते हैं, दूसरा करेंगे तो वो किस में आएगा? रिमेंबर द कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट, इंटीग्रेशन. एंड पीडीसीए को भी हम इसीलिए कभी आप साइक्लिक में देखेंगे, वो आपके ऊपर है. दिस इज, बट वी आर ट्राइंग टू शेयर विद यू what is already existing, and existing which is reachable by all. एक समेटिव का एग्जाम्पल भी है. अब समेटिव सिर्फ मार्किंग से होगा. कैन यू रीड दिस? आई डोंट वांट टू रीड इट. Completion of projects. I was sharing this with you. Reports on experiences or their own thinking about their own learning. Anecdotal records. बेशक वो किया फॉर्मेटिव टाइम में है, but the outcomes are reflected either in curriculum goals, in competencies, or in LOs. Could be, and the same, you will get this, the reference is there as I shared in the page number. Can they write extended essay, and can we make it part of our reporting? Can we give value to what a child has gone through in learning? And last one, we all have been working on it. Paper pencil test, case studies पर base होने चाहिए, analysis of the document and the tools of analysis to be given. We may have in it MCQs, short essays, and rubrics to be shared with students so that it becomes a comprehensive assessment. And all this is available in the magic pitaras that we have nowadays. NCF 2023, Nipun, Bharat, SBA, दीक्षा पे मैंने जब SBA कोर्स करा उसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया. I had committed and shared with you that assessment cubing क्या होती है. क्यूब की साइड 6 होती है, तो उसमें भी ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए है. जब आप टास्क देते हैं तो क्यूब में डाल के देखिए. पहले में सिर्फ आप कॉन्सेप्ट्स और टारगेट एरियाज करेंगे. सेकेंड में you would give the command so that differentiated elements can meet the learners. Like अगर आप पहले में सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को कर रहे हैं, सेकेंड में आप क्रिएट करने को कह रहे हैं, यूजिंग इट क्रिएट द कैरिकेचर ऑफ द कैरेक्टर्स, and we are going to give them the direction of working for it. And according to the readiness or interest or learning profile, we color code them, that I have achieved this color instead of marks or grades. And we allow the students to complete that cube in a week's time, instead of सब बच्चे एक काम एक साथ करें. अब वही बात है ना कि स्नेल एक पेस पे चलेगी पर चलेगी, and horse will be riding in one pace. But do we give that environment to them? And when we do this, उसका step क्या करेंगे? And इसका core Bloom's taxonomy ही रखना है. Write a letter to character, create or perform a puppet show, create a mural or picture to show a scene from the story, Venn diagrams, contrasting this,
story map of book, create an art, और हर बच्चे को ये कहा जाए, I think you can read it, कि आपने कम से कम 4 करनी है to attain the competency of this level. कोई भी 4 करिए. The best part is when they'll present it, you would be surprised, they would have touched almost every of activities, and every part of the activities that you give them, they would have also gone beyond it. अब इसको फॉर्मेटिव में रखेंगे, पार्ट ऑफ सबमेटिव रखेंगे, आपके असेसमेंट पॉलिसी पे है. Do you agree to it? Does it also support you in planning things? अब स्टैंडर्डाइज पे आते हैं. रिटन टेस्ट, परफॉर्मेंस टास्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ्स पोर्टफोलियो और लार मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगता है. जब मैंने ट्रेनिंग भी की इस पे, असेसमेंट एंड असाइनमेंट, लर्न क्या करना है, आउटकम्स डिफाइंड है, अप्लाई कैसे करना है उसको एनालाइज कैसे करना, रिफ्लेक्ट कैसे करना है, उसकी कैलेंडरिंग कैसे करनी है, प्री टर्म, मिड टर्म, पोस्ट टर्म असेसमेंट्स कैसे बनानी है, कितनी फॉर्मल कितनी इनफॉर्मल करेंगे, और को कंस्ट्रक्ट ऑफ लर्निंग यानी असेसमेंट क्यूबिंग कितनी करेंगे, ये भी. इन सब को मिलाकर हम सबमेटिव की एक डिस्क्रिप्शन बनाएंगे टू बी शेयर्ड विद ऑल. ये प्लानिंग का पार्ट है, बट अगेन ये डू भी है, ये एक्ट भी है, चेक भी है, चेक भी है और एक्ट भी है. डू यू अग्री टू इट? Does it also support the queries? अब हम आते हैं कि चेकिंग भी हो गई, टेस्टिंग भी हो गया, फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कैसे करेंगे, क्योंकि यही बेस है. सिर्फ मार्क्स की फीडबैक करेंगे, पास फेल फेयर सेटिस्फैक्ट्री करेंगे, या वी कैन हैव अदर पैराडाइम्स आल्सो. तो उसके लिए भी सबसे जरूरी है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एक प्रिंसिपल या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, जैसे हमने नॉलेजेबल में देखा था कल्चर में, they will look at the periodicity of administration of these assessments. In what periods are we assessing? Are we assessing every week for no reason and no purpose shared with students or the other stakeholders? Are we preparing enough timeline of teaching learning so that our students are joyously agreeing to it and there is no distraction of any pressure, performance or judgment? Are we clear on the difference between scoring and the processes of evaluation? Because validation तभी होगा कि मैं मार्क करूं तब भी उस बच्चे का उतना ही rubric या उतना ही norm पे आए, और आप करें तब भी. कभी-कभी it has been seen one gives 2 and another gives 10. And that can only be attained through clear rubrics. And the scoring guides, I again say NCF, page number भी आपसे share किए हैं. And how are we grading and reporting? Culmination of kitna? One time? Yeah, as I shared with you, the multiple opportunities. And कुछ ये कहना कि नहीं, मेरा ये नहीं लिखिए, I can do better than that. Can you give me an opportunity to improve on it? सबसे पहले तो ये भी, और वैलिडिटी अब कल बोला गया था तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक something that is practice. When we have group work, अक्सर कहते हैं उनकी social skills कैसे करें, जो आप कहते हैं emotional skills. So instead of marks, we have the grade points, and we also call them as developmental points. जैसे मैम कल कह रहे थे, जरूरी नहीं है वर्कशीट का ये जाए, वो लर्निंग शीट्स भी हो सकती हैं. So we have kept, ये brief है because again इसमें आप अपना ऐड कर सकते हैं, you can delete. We look at two aspects: active participation, because we've set the tone of active learning, how focused and attentive they are to the purpose, from emerging, developing, proficient to exemplary.
I'm sharing this with you as a sample. I'm sure you can read it. I'm going to pause for a minute because I want you to not go by my flow, but to please take it so that we can discuss it later. और ये ग्रोथ 4 में डेसिमल पढ़ाने पर है. Now the targets, outcomes, represents decimals, understanding of place value. Again, emergent, developing professions, exemplary. The rubrics are defined to them. And this is a great support in AFL and ASL. ASL maybe we check it out when we make our questionnaire, quizzes, or any other form of the formative assessment, we use this across. And we, हम चारों हैं ये. Reflection criteria. कि अगर मेरे को, if I have not been able to attain my previous one, for a teacher, for a student, both, these could be used in simplified format for the student, as well as a teacher can use for feedback, for improving the teaching learning. एक quick question है. ये आप 3 question. What is the difference between feedback and feed forward? Why is it important and are we open to it? And what is the right way of doing it? Honestly, right way तो कोई भी नहीं बता पाएगा, but there could be suggestions. Because हम भी वही खोज रहे हैं, मैम कह रहे थे ना, we all are learners together. So 7 principles हैं, as it takes a village to raise a single kid. The feedback practice is about the goals, criteria, and expected outcomes. Developmental self-assessment reflection models are there. So what you've done, how much have you learned, and what are you learning is reflected here. And it is high quality of information to learners because the clear learning outcomes are there and they're developing certain levels of competencies through the continuum, that developmental continuum given to them. It encourages teachers and their peers to have dialogue about attainments and the higher achievements and the planning, or the underachievement and the planning. It gives a lot of positive motivational beliefs and self-esteem because you are yourself seeing the mirror. Children are themselves understanding why they are not able to achieve it. And it also is about the gaps that we see between the current and the desired in terms of action. और feed forward plan करने का आता है और check करने के बाद act करने के लिए pathway बनता है PDCA में. And it is definitely going to help. Self assessment के लिए मेरे को ये अच्छा लगता है, एक आप भी इसको देखें और मैंने मैम से शेयर किया था. She says go ahead, we can share. इसका रेफरल है प्लीज, ये मैंने लिखा है नीचे. Your understanding, और ये जूनियर से सीनियर्स में यूज हो सकता है, रिफ्लेक्टिव शीट सिंप्लीफाइड करके हो सकता है. We can use this as a parameter for feedback, feed forward, both. A reflection or improvement card I am sharing, which is generally I'm sharing with you, which we quiz one another with. And when all of us, the resource person, you're saying, when we look at certain things, we say, how do we interpret these? So maths quiz assessment के targets I had shared with you. Reflection कैसे होगी? It is about grading the quizzes. After grading the quizzes, she sees that there's a significant number of students who are struggling with word problems involving addition and subtraction.
And some students had difficulty about carrying over and borrowing with solving problems. So she sits down with peers and they all decide to address these issues by incorporating more real life, taking them out, taking them, using the resources, taking the ice cream sticks, the bottle covers from the plastic bottles thrown away. They have made these sources. They do the dominoes. They do the activities through the Sudokus at the higher level. And then they use the same in the classroom for the future or essay for the action. It is up to us how we take it. And that gives us the standard of setting the reflection and improvement. I rest my case with all of you from the heart and from the collective gratitude from all of us. Thank you for being with us today. Now it's a question time. And because I see a lot of messages, and I would want whole of the team to please respond to these. Recommendation है, ये आपकी strategies भी हैं. आपके लिए ये defined भी है NCF में, निपुण भारत में. Various training, दीक्षा पे जाएंगे, निष्ठा पे जाएंगे. This is what we are aspiring for. NEP says this. क्योंकि ये बच्चे आने हैं to lead this nation to the next level of greatness. If we agree to it, thank you. Question and answer, please. And I rest my case. So, Deepa ma'am, you want me to quickly take it up? I would request, ma'am. Okay, so I tried to, together with Rita ma'am, who's also been sharing the responses. So I just tried to put everything together at one place so that we can quickly complete this in time, in the allotted time. So the today's session, I think, thank you, Deepa ma'am. It's been really, really amazing. Assessments is something that we are all very concerned about. और अभी भी हमें बहुत clarity नहीं है. So CBSE is organizing a lot of capacity building programs on school-based assessments, and it's a 2-day module instead of 1 day. तो फर्स्ट डे में पूरा ये जो बैकग्राउंड है कि हाउ एंड व्हाट एंड व्हाई एंड डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट्स एग्जामिनेशंस वो सब लिया जा रहा है. एंड सेकंड डे में जो हम 10th 12th का जो CBSE असेसमेंट पैटर्न है वो बात कर रहे हैं. Right, so as Deepa ma'am said that we are not talking about right now 9 to 12th. So there is a certain guideline which is very clearly given to us, but NCF documents, foundational stage documents हमें बहुत कुछ inputs दे रहे हैं. So a lot of clarity on the session, informative, knowledgeable, thoughtful, insightful, sorry, informative is coming twice, useful. The session will shape our learning, and I loved this one. Blessing to have you walk us through the assessments. और एक बहुत अच्छी चीज़, I think Anjali ma'am, you will also be very happy to hear and note from all the the responses in the chat box. जो लोग बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं. आई थिंक द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि लोगों ने सोचना शुरू किया है, ट्राई करना शुरू किया है. एंड फॉरगिव मी इफ आई हैव नॉट बीन एबल टू राइट ऑल, बट लोग कह रहे हैं लेट्स यूज़ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. लोग क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, PBL की बात कर रहे हैं. लोग प्रिपेयरिंग आवर चिल्ड्रन फॉर चैलेंजेस अहेड की बात कर रहे हैं. एंड कुछ स्कूल्स कह रहे हैं हम बहुत अच्छा भी कर रहे हैं. हमें स्टूडेंट सेंट्रिक होने की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड द लेवल एट विच चिल्ड्रन आर. जो दीपा मैम्स बीन सेइंग असेसमेंट फॉर लर्निंग कि बच्चा किस लेवल पर है. और ये मुझे अच्छा लगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डूइंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और वो फॉर लर्निंग एज लर्निंग रह जाता है. एंड आफ्टर द वेबिनार्स, ये भी बहुत क्यूट था, वी विल हैव टू जॉइन द डॉट्स. हमें डॉट्स जोड़ने की ज़रूरत है वेबिनार के बाद. रेफर टू NCF, हमें अपना डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा. खौफ नहीं है लेकिन बटरफ्लाई ज़रूर है. एंड इट्स अ लॉन्ग रोड बट द जर्नी हैज़ बीन इनिशिएटेड, है ना अंजलि मैम? साउंड्स गुड. इनिशियल स्टेजेस वी नीड टू वर्क वेल. इंफॉर्मेशन बच्चे के बारे में कलेक्ट करें, फिर
plan करें individual education plans. Learners will assess themselves, provide feedback for the teachers to evaluate, reframe their learning plan for learners. All these are suggestions and sharing that's happening in the group. इसका मतलब है लोग बहुत कुछ कर रहे हैं. Providing space to move learners to move at their own pace. Somebody spoke about when Deepa ma'am you were sharing about activities, तो किसी ने brain dump activity की बात करी और उसको explain भी करा. Lot of planning required and mapping of LOs, वो joy of learning लाने के लिए. फिर somebody explained the positive effect of portfolio and also wanted to focus on SOPs. And the number of responses बहुत सारे आए जब आपने question पूछा था feedback and feed forward के बारे में. So I think this is very heartening to note. Quickly some of the concerns and इसमें से काफ़ी तो आपने address कर लिए हैं. Records जो किसी ने बोला कि बहुत limited time है, बहुत ज़्यादा करना है, कैसे करें, तो I quickly tried to prepare one छोटा सा template कि हम बात करते हैं कि एक हमारा syllabus bifurcation होता है and all schools have it. अब हम उस बाइफिकेशन को ACPP में जब करते हैं तो थोड़ी क्वालिटी ऐड हो जाती है कि हम कैसे करेंगे. हर स्कूल में एक लेसन प्लान होता है. उस लेसन प्लान में हम डालते हैं नंबर ऑफ चैप्टर्स टू बी डन इन ईच मंथ. जब हम उसमें डालने लग जाएंगे कि हम कैसे करेंगे, क्वालिटी ऐड हो जाएगी. हर स्कूल में ऑब्जर्वेशंस होती हैं. हर स्कूल अपना ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट यूज़ करता है. वो भी तो एक डॉक्यूमेंट है हम सबके पास. ऑल दीज आर डॉक्यूमेंट्स दैट वी ऑल हैव. यू डोंट हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू. आप टीचर्स को फीड फॉरवर्ड देते हो, चाहे रिटन में देते हो, चाहे वर्बली देते हो, चाहे बैठा के देते हो, अपना कहीं पे नोटिंग करते हो, वो भी तो एक रिकॉर्ड है. आप फिर टीचर्स अपने इम्प्रूवमेंट लेके आती हैं, आप डायरी में इम्प्रूवमेंट देखते हो, वो भी तो रिकॉर्ड है. बच्चे की प्रोग्रेस दिखती है जब टीचर्स ने उसके ऊपर IEP करा, हेल्प करा. यू सी द प्रोग्रेस इन द चाइल्ड्स, द प्रोग्रेस शीट एंड नोटबुक्स एक्सेट्रा कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, रिविजन्स कर रहे हैं, वो भी तो एक डॉक्यूमेंट है. एंड इवेंचुअली आपका पोर्टफोलियो बनेगा, एनेक्डोटल रिपोर्ट हो सकता है अभी नहीं बने हो, कोई बात नहीं, but they can be a part of your documentation. So I hope that example will help you कि आपके पास already है. What you need to work on is now look at कि इसकी quality मैं और कैसे अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. So I hope that helps to give you a little clarity. And of course, your individual sessions, capacity building sessions will also help you. CBSE एक ने बोला कि LOs तो हमारे पास हैं, अब हमें everything handwritten format में क्यों मांगा जा रहा है. So CBSE, NCERT, LOs are there कि करना क्या है, कैसे करना है वो तो किसी ने नहीं बताया अभी हमें. राइट, एग्जाम्पल्स आर देयर, एक्टिविटीज़ आर देयर, सजेशंस आर देयर, बट कैसे करेंगे वो अपने अपने स्कूल पर डिपेंड होगा. तो अगर हम किसी बहुत इंटीरियर स्कूल में जाते हैं, उनकी अपनी तरीके की मेथडोलॉजी है. कहिए अब अगर हम एक एक हाई एंडेड स्कूल में जाते हैं, उनकी अपनी तरीके की मेथडोलॉजी है, लेकिन सब कर रहे हैं. सो येस माय डियर फ्रेंड्स, दिस विल हैव टू बी डन. चाहे आप वो हैंड रिटन करो, चाहे उसको डिजिटल करो, चाहे आप उसको हार्ड कॉपी में दो, चाहे ERP में डालो, करना तो पड़ेगा. कि हम इसमें करेंगे क्या, वो आप ही के लिए क्लैरिटी है. किसी ने कहा शेयर एग्जाम्पल्स, तो आई थिंक इन द लास्ट 3 days a lot of examples have been shared, जो extracts from diaries, activities on music, activity on show and tell, activity जो Rita ma'am ने and myself we had done quite a few examples of skill building activities. ACPP की भी हमने एक example share किया था. lesson plan format on biology, on digestive system, वो भी शेयर करा था आपके पास. So as and when given the time frame we are sharing examples. If we don't have too many of them right now, that will be taken up in your offline sessions, right? डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बार बार आ रहा था. जैसे दीपा मैम ने कहा, असेसमेंट है कि बट इट्स ऑन गोइंग. असेसमेंट ज़रूरी नहीं है कि हमें रिपोर्ट कार्ड में दिखाना है, बट असेसमेंट इज़ टू अंडरस्टैंड बच्चा कितना आगे बढ़ गया. वो 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, अब वो 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट में जा सकता है. अगर वो अभी भी नहीं कर पा रहा, तो हैव टू अगेन गो बैक टू 2 digit into 2 digit and find out where the problem is. Right, so assessment is only to understand बच्चा आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है.
और एग्जामिनेशन इज समथिंग जो आप बस खटाक PT1 किया और आपने नंबर्स दे दिए और वो रिपोर्ट कार्ड में चले गए, वो भी ज़रूरी है, because at the end of the day we also need to have a cumulative result also. So assessment for learning ongoing है and of learning आपका periodic है. Unnecessary information to be removed from the slides, we can do that. Somebody asked कि हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा या एग्ज़ाम होगा. आपका एग्ज़ाम अपने आप के लिए ही है. आपको अपना रूब्रिक बनाना है, अपना क्वेश्चन पेपर बनाना है और अपने लिए खुद एग्ज़ाम सेट करना है कि मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ जा सकती हूँ या जा सकता हूँ. और सर्टिफिकेट की बात रोज़ हो रही है. हमारा सर्टिफिकेट यही है कि अगर हम एक चेंज लेके आ पाएँ बच्चों की सीखने की गतिविधियों में, उसकी प्रतिक्रिया में, हमारे जो अपने रिस्पॉन्सेज हैं, आई थिंक वही हमारा सर्टिफिकेशन है. टेक्निकल इश्यूज हो सकती हैं लूप की. Assessments in classes 1 and 2, I'll show you an example of an HPC at the end of it. और बहुत ब्यूटिफुली फाउंडेशनल स्टेज का जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये बहुत करिकुलर गोल्स दिए हुए हैं और मेनी स्कूल्स आर अडॉप्टिंग इट एज अ प्रोग्रेस कार्ड. तो आप टाइप करेंगे अगर गूगल बाबा में और लिखेंगे NCF फाउंडेशन स्टेज, आपको वो पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा. उसके अंदर आपको उसका करिकुलर गोल्स के एग्जाम्पल्स और डोमेन्स मिल जाएंगे विच यू कैन यूज़ फॉर योर रिपोर्ट कार्ड्स. हाउ मेनी असेसमेंट्स इन अ ईयर? अब ये डिपेंड करता है कि हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का अगेन यहाँ पे कन्फ्यूजन था. तो CBSE 5 में से अंजलि मैम गिव्स यू द परमिशन दैट टिल grade 8 यू हैव दैट लिबर्टी. आप PT1 PT2 नहीं करना चाहते, आप सिर्फ असेसमेंट्स करना चाहते हो. आप एक बट डू रिमेंबर असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब आप बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो टू इम्प्रूव ऑन व्हाट दे आर डूइंग. अगर आप इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहे हो तो वो समेटिव ही कहलाएगा. सो डू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस, क्योंकि अभी इतने शॉर्ट टाइम में दोबारा से क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा. बट डू अंडरस्टैंड एंड टेक योर वर्कशॉप्स ऑन 2 days ऑफ असेसमेंट्स. डू आस्क फॉर इट, क्योंकि ये बैकबोन है. इसी असेसमेंट पे पेडागोजी बेस्ड है, इसी के ऊपर बेस्ड है दैट डू वी अंडरस्टैंड कि करिकुलम में होता क्या है. So let's look into that and honest admission about going through the NCF. Portfolio किसी ने पूछा which kind of assessment. So once again it is up to you. अगर आप एक हार्डकोर लेबलिंग कर दोगे 10 मार्क्स का पोर्टफोलियो है और कल्पना कपूर को 2 नंबर मिल गए तो वो तो ऑफ लर्निंग हो गया, एग्जामिनेशन हो गया. लेकिन आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी अपने पोर्टफोलियो को अच्छा सुंदर बनाने के लिए. सुंदर मतलब ब्यूटिफिकेशन नहीं, सुंदर मतलब जो टास्क आपने दिए वो मैंने ठीक से किए हैं और मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी दी उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो वो फॉर लर्निंग बन जाता है. सो वो अगेन आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का पोर्टफोलियो को असेसमेंट लेना चाहते हैं. असेसमेंट एज लर्निंग, अगेन read up a little on it, but to quickly give you in 30 seconds, assessment as learning, मान लीजिए आप एक ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं, उस ग्रुप एक्टिविटी में पीयर लर्निंग भी हो रही है, बच्चे एक दूसरे को फीडबैक भी दे रहे हैं, टीचर भी घूम रहा है, फीडबैक दे रहा है, बच्चा रिफ्लेक्शन कर रहा है और अपने आप इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो वो पढ़ते पढ़ते इम्प्रूव कर रहा है या टास्क करते करते इम्प्रूव कर रहा है. दैट इज एज लर्निंग. HPC I'll just share with you. And somebody asked what exactly do we have to prepare for inspection. So friends, अभी एक साल तो word inspection भूल जाओ, बाकी का God bless us, we don't know. CBSE will give us information or affiliation team will give us. Right now CBSE wants you to make sense of the score. CBSE wants you to try. आप प्रयोग करिए, अभ्यास करिए, डेवलप करिए, इम्प्रूव करिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए. अभी एक साल प्लीज गो ahead and do that. Wanted some clarity in slides and pictures. We'll look around that. किसी ने कहा कि अगर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कैसे स्कूल्स इम्प्लीमेंट करेंगे. तो मेरा मानना ये है कि लेट्स फर्स्ट लुक एट आवरसेल्व्स. हम अपने आप को देखें, अपने स्कूल को देखें, हम क्या कर सकते हैं, एंड लेट द अदर्स लुक एट देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर. रूब्रिक्स का दीपा मैम ने ऑलरेडी तब तक शेयर कर दिया था, सैम्पल ऑफ अ रूब्रिक. एंड अगेन जब आप वो असेसमेंट की वर्कशॉप्स करेंगे उसमें और भी रूब्रिक्स आपको देखे जाएंगे. एक कॉमन क्वेरी होती है कि जब बच्चे ज़्यादा होते हैं, रेशो ज़्यादा होता है तो कैसा करें. तो आपकी जो क्लासरूम मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स हैं
वो आपको सजेस्ट करती हैं कि अगर बच्चे ज़्यादा हैं या ग्रुप्स ज़्यादा है तो हम कैसे कर सकते हैं। अलाइनमेंट ऑफ एलओज विद टास्क, जब आप पेडागोजिकल आउटकम्स की वर्कशॉप्स करते हैं उसमें भी CBSE डज दोज ऑफलाइन वर्कशॉप्स ऑन हाउ डू अलाइन द एलओज विद आउटकम्स, वो भी एक CBSE करता है। किसी ने कहा PDCA टू बी रेड हॉरिजॉन्टली, आई थिंक दीपा मैम ने आंसर किया था। PDCA हॉरिजॉन्टली मैम दिखा रही थी आपको, शोइंग यू कि अगर जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं वो कहाँ फॉल करते हैं। अदरवाइज इट इज़ अ सर्कुलर साइकिल ऑफ PDCA। हाउ टू कंडक्ट CBE अगेन इन योर ऑफलाइन वर्कशॉप्स। बुकलेट्स जो मैंने लास्ट सेशन में आपको बहुत सारे दिखाए थे, जो CBSE की 45 मैनुअल्स ओनली ऑन CBE, joyful learning, mathematics, art integrated, sports integrated, inclusive education, बहुत बहुत हमारे पास, as Deepa ma'am kept saying that we have enough material for you to go through. So let's say spend the next 2 months only in gathering data कि हमारे पास है क्या क्या, उसको देखिए आप। And do the students have to worry about marks? Marks secondary हैं। सो मार्क्स इज अ सक्सेस क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज कंटेंट, लेकिन अगर अगर आपके मार्क्स का डिवीजन इज बेस्ड ऑन नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, दे विल हैव मीनिंग्स। इफ दे आर बेस्ड ऑन रूब्रिक्स, दे विल हैव अ मीनिंग। लेकिन अगर वो सीधा 100 में से 40 है, दे हैव नो मीनिंग। वो 40 मुझे कहाँ मिला? रटने में मिला, या मुझे अपनी स्किल दिखाने में मिला, या मुझे अपने एटीट्यूड एंड अप्रोच दिखाने में मिला। सो यू हैव टू लुक एट हाउ इज़ योर असेसमेंट या एग्जामिनेशन डिज़ाइंड। CC के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि हम लोग कुछ चीज़ें कर रहे थे। सो नाउ यस, CC के कुछ कंपोनेंट्स थे। सो बेसिकली ये पूरा NCF डॉक्यूमेंट तो 2005 का है ना। सो वी आर ऑल इवॉल्विंग, ग्रोइंग, मेकिंग इट बेटर, making it more organized, making it more available to you, giving you more hand holding, so that we don't suddenly say कि ओके कल हमें दिखाओ, कल आपकी इंस्पेक्शन है अब दिखाओ, वैसा नहीं है। सो डू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस सेंटर्ड अप्रोच। कुछ लोगों ने बोला सिलेबस रिड्यूस करना पड़ेगा, तो NCERT इज लुकिंग इनटू द बुक्स। वो जब आएगा आएगा, तब तक हम ग्रेड 8 तक तो कर ही सकते हैं एंड बिल्ड अप ऑन द स्किल कॉम्पोनेंट। स्कोर का पार्ट हो गया था। हाउ डू वी टेस्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। आई थिंक जो रीटा मैम के और पेडागोजी सेशन में, असेसमेंट सेशन में, अ लॉट ऑफ दीज कंपोनेंट्स हैव बीन कवर्ड, कि आपकी अपने लेसन प्लान में भी नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड कवर हो रहा है। आपकी थिंक शीट्स, वर्कशीट्स में भी अगर आपके 3 सेगमेंट हैं नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड्स के, आपकी जो असेसमेंट होती है उसमें भी ये 3 कंपोनेंट्स हैं। आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी हम 3 कंपोनेंट अगर बिल्ड कर रहे हैं तो यू विल फाइंड इट मच ईजियर। सो आई थिंक दीज वर द लास्ट फ्यू। ये मैंने आपको दिखा दिया। ये रूब्रिक्स ऑलरेडी मैम ने भी दिखा दिया था आपको। तो रिमेंबर, रूब्रिक्स इज 3 थिंग्स: लेवल्स, क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्टर्स। अगर मैं सिर्फ क्राइटेरिया दूंगी तो इट इज़ नॉट अ रूब्रिक, लेकिन अगर मैं ये डिस्क्रिप्टर्स बीच में ऐड कर देती हूँ और ऊपर लेवल्स भी हैं, देन इट इज़ अ फुल रूब्रिक। सो वी कॉल इट एज LCD टू रिमेंबर इजीली: द लेवल्स, द क्राइटेरिया एंड द डिस्क्रिप्टर्स। तो अगर ये तीनों चीज़ें हैं जो मैम ने दिखाई थी, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ रूब्रिक, एंड यू विल गेट मेनी मोर rubrics as samples in your assessment workshops. So I do hope I have been able to. Anything I've missed out, Rita ma'am? Last one, I had to show you the HPC. If you have the time, I can show you that. Just give me a second to open that. Ma'am, do show that, and I've added few in the our common WhatsApp group. If you could access from there, otherwise I can ask. Yeah, one second. I'll just open this HPC. Thank you, Rita ma'am, for sharing this. Yeah. So this is one report card of a school. So very cutely made, very student centric, all about me, and the child is writing it. My name is this, my height is this. So the child takes his own weight, asks his friends to measure the height, things I like, my friends, my favorite food. So cute, written by the child. A glimpse of myself. How do I view myself? मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ या देखता हूँ?
इनफैक्ट एक स्कूल में मैंने देखा दे हैव गॉन टू द लेवल ऑफ कि मैं एंड ऑफ द ईयर कैसे मैं अपने आप को देखता हूँ या देखती हूँ। तो छोटे बच्चों के लिए दे मेड इट पिक्टोरियली। एक बच्चे ने पूरे मसल्स बना के दिखाए क्योंकि उसको वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे थे। तो द चाइल्ड वांटेड टू बी स्ट्रांग एंड हेल्दी, सो ही शोड इट थ्रू हिज मसल्स. A glimpse of my family, where the child is drawing the family, they can write the names of their family members, the age of their family members. तो ये आपका फर्स्ट गोल है, हेल्थ एंड वेलबींग, और ये कॉम्पिटेंसीज हैं. अब इन कॉम्पिटेंसीज को असेस करने के लिए ये आपके आउटकम्स हैं. पार्टिसिपेट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, इनिशिएटिव लेता है. यू विल फाइंड दीज एग्जाम्पल्स ऑन द CBSE ऑल्सो साइट. एंड हर टर्म में टीचर, हो सकता है कि हर टर्म में मैं हर चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर रही हूँ, सो आई ऑब्जर्व वन टर्म टू, दैट इज़ अ डिसीजन यू कैन टेक. सो ये सारा आपका फिजिकल डोमेन का हो गया, टीचर के रिमार्क्स हो गए, और ये है बिगिनर है, प्रोग्रेसिव है या प्रोफिशिएंट है. सिमिलरली डेवलपमेंटल गोल 2, ये सब NCF के डॉक्यूमेंट से कोरिलेटेड है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, योर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये आपके लर्निंग आउटकम्स हैं. दैट इज योर सेकेंड करिकुलर गोल. थर्ड डेवलपमेंटल गोल है आपका इन्वॉल्व्ड लर्नर्स. कॉम्पिटेंसीज क्या डेवलप होंगी? कॉग्निटिव, एनवायरमेंटल, आपका EVS, नंबर, शेप्स, न्यूमरेसी, मेजरमेंट एक्सेट्रा, ये लर्नर आउटकम्स हैं. ये सेल्फ असेसमेंट बच्चे का खुद का कि मैं कहाँ हूँ. एक्टिविटी दैट आई फाउंड डिफिकल्ट, अगर बच्चा नहीं लिख सकता है तो टीचर भर देगा. पीयर फीडबैक, सो क्यूट. आई एम हेल्पफुल, आई शेयर, आई डू एक्टिविटीज टुगेदर. Parents' feedback, my child now enjoys. Just make sure that the parent doesn't end up only in saying कि उसके मैथ्स में मार्क्स अच्छे नहीं मिले. That's the parental orientation हम लोग को करनी पड़ेगी before we roll out the HPC. उसके पहले लॉट ऑफ डायलॉग, लॉट ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, टीचर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी, स्कूल कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ओरिएंटेशन कैसे करेंगे. तो लॉट ऑफ होमवर्क विल हैव टू बी डन बिफोर वी रोल दिस आउट. सो ये पेरेंट फीडबैक है. enjoys reading but faces difficulty in writing, thankful for supporting and guiding, ability to express his feelings. तो ये पेरेंट्स का फीडबैक है, ये टीचर का रिमार्क है. ये बच्चे की जो उसने बनाई होगी वाटर साइकिल में, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, उसकी पिक्चर ऐड होगी है उसके पोर्टफोलियो में. उसने पार्टिसिपेट किया एक्टिविटीज़ में. सो अगर इनिशियली पिक्चर्स नहीं आ पा रही हैं, नहीं कर पा रहे हैं, डजेंट मैटर. हम थोड़ा बेसिक जो हम कर सकते हैं वो तो शुरू करें एंड ट्राई इट आउट. सो आई होप दिस हेल्प्स. डू गो थ्रू the NCF documents also. And I think Sujata ma'am ne last पूछा report card for foundational stage. Yes, so we need to recreate. As I shared with you in one of my sessions, that एक स्कूल ने 11th-12th में भी डाल दिया physical, socio-emotional and all of that, and competencies they have put it there. Okay, so one of the participants says, भाई too many acronyms मत use करिए, हम confuse हो जाते हैं. Okay, yes, we'll try and keep that. We'll keep that in mind. It would help if you can provide us a model document. Okay. For art integrated learning, somebody has asked. So that is already there in your CBPs also. Art integrated learning, वो already है. और ये भी एक आया है आज, और अच्छे से समझ सके राष्ट्रभाषा में सुनने में. आशा करते हैं कि आगे भी हिंदी में समझाया जाएगा. सो वी विल ट्राई टू बी बाइलिंगुअल because there are some schools that do not understand at times Hindi also. So we will have to be bilingual a little. Yeah. So I think Rita ma'am, I think we have covered all. Yes, ma'am, most of it. I think in any case, we have overshot the time. So we'll keep that, respect that timeline also. And thank you, Deepa ma'am. I think we learned a lot today. And like we all also understood while we were debating what all to consider in us presentations, we realize it's a very, very huge topic. And like Kalpana ma'am has already elaborated that all these you will have to kind of
take it as a, what do I say, PDPs that you need for your teachers, or sorry, not PDP, professional development programs. Capacity building program. CBPs are more. Capacity building. So we basically don't want to, CBPs, yes, we don't want to, we'll try that we try not to use as many acronyms as possible, but at the same time, as we all understand one another, let's get into the acronyms so that we can move faster. Yeah. So thank you. I think over to Thank you, Rita ma'am. Anjali ma'am. Yeah. Thank you. Thank you to these wonderful, beautiful, and ladies, good teachers, wonderful mentors, and above all, great human beings. Always there. I can see your what is this called? This is for the participants' patience. This is for the And thank you festive. to all the participants for patiently listening, for responding, for giving us questions to answer. We also need learn a lot of things when you ask questions, and we also realize what else need to be given to you. So we improve with every new session. So hope to see you all on 31st July, same time with the next domain. And thank you once again. Now you can all enjoy your cup of tea and discuss everything if your colleagues are around, or share it with your family also. So thank you so much. Have a good evening. Thank you once again, Deepa ma'am, Rita ma'am, and Kalpana ma'am. And thank We you. apologize for the delay, 12 minutes delay. Yes. And thank you, our wonderful IT team who's always there to help us. Without them, I think it's not possible to reach out. to Just so a many little word, just a little Sure, word for sure, ma'am. Samiksha and the IT team. Once the video goes, I mean, out of live mode, all the comments go out. So in the fresh comments, if you could post the links to the documents that we keep referring to each time, whether it's Nippon or NCF or the learning outcomes that NCRT has come up with, it'll stay there, and these participants can keep visiting those documents. Sure, those sure, ma'am. links. And one thing I request all the participants, a lot of you I sense from your discussion in chat box and with your questions that you do not visit CBSE academic website. Please go to the website. There are a lot of things which are really helpful. Go to the website, take advantage of each and everything we have put in there in various heads, HPC, SQAA, SIC, all things are there. Do not Google it. Please go to cbseacademic.nic.in. That is your authentic source of information. Everything from CBSE comes in there. Go to the website, and this is your homework on 31st. I think you will be back with more challenging questions for us. Thank you so much, and once again, have a good evening. Thank you, ma'am. Thank you, team, as Thank you. always. Thank you, everyone. Thank you so much, Deepa ma'am, Rita ma'am. Good Thank day. you. And to Shanti ma'am, who's listening also to the Cheers. sessions. Yeah. And Manju ma'am. Yeah. Manju ma'am. Thank you, everyone. Bye bye.